Our top story, the air quality in Delhi continues to be in the severe category yet again with more than 421 points this morning, Parmeshwar. Of course, many suggestions that are being put in place, including schools that will remain shut from today till about the 18th. To combat the escalating air pollution crisis, the Supreme Court has proposed that the Delhi government consider prohibiting app-based taxis that are registered in other states from operating within the national capital. Of course, we are waiting on an official decision on this. The Delhi government has decided to reschedule as far as the winter break is concerned for all schools in the national capital in the light of the air quality which is deteriorating by the day. The winter break was initially planned to start in December, but it will now commence from today and it will continue till the 18th of November. Meanwhile, Divya, Delhi's odd-even car rationing scheme also hangs in the balance, awaiting the Supreme Court's assessment of its effectiveness. In fact, the Supreme Court had questioned the Delhi government whether it's all optics. Absolutely. They went on to say that it's mere optics when it comes to the odd-even formula. Parmeshwar, do remember this is the fourth time that they have suggested to implement the odd-even formula. It had happened thrice before, and according to experts, it just did not work. It made no difference. But also to keep in mind that this is the first time since 2019 when they are going to be, they are suggesting to implement this. And of course, the schedule, this is as far as that hearing is concerned, the Supreme Court will take that decision. Delhi's air quality is one of the worst amongst the world. That's right, with the University of Chicago report finding that air pollution reduces life expectancy by almost 12 years. For over 6 days now, the national capital is actually enveloped by a toxic cloud, causing a massive public health crisis, Divya. The Delhi government is scrambling to find solutions as the farm fires in Punjab show no signs of stopping. An early school break has been declared as the Delhi government minister even mulls over artificial rain. Meanwhile, the politics continues with a blame game between the centre, Delhi and Haryana. National capital covered in a toxic haze for the 6th day in a row. As Delhi's air continues to spew poison, the AAP government now seems to be scrambling for solutions. Delhi Environment Minister even met IIT Kanpur and CII experts to consider options of artificial rain. Delhi schools have been directed to take an early winter break from November 9th to 19th. But the Delhi government has still not elaborated further on its odd-even scheme plans after Supreme Court's terse words on Tuesday. अभी छुट्टी जो है वो विंटर की छुट्टियों में जितने दिन का ये ब्रेक अभी लिया जा रहा है वो विंटर की छुट्टियों में उतना वो निकल जाएगा. Recent studies have shown that farm fires are not the main contributor to pollution, but the top court had banned stubble burning. However, statistics show how the ban is being flouted daily. Punjab recorded over 1,500 incidents on Tuesday, and till Tuesday, the total number of farm fires had touched nearly 21,000. A section of farmers believe that burning crop residue after sunset may help them evade detection by satellite. Meanwhile, the blame game between Haryana and Punjab continues. हरियाणा में जब आप कह रहे हैं कि हरियाणा हमने बहुत कुछ कंट्रोल कर लिया है, जो है वो भी हम ठीक करेंगे, लेकिन पंजाब में और ज़्यादा हो रहा है उसका, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन दूषित हवा की कोई सीमाएं तो है नहीं. जो पंजाब में पराली जलती है, लॉस तो उसका जनता को, हरियाणा की जनता को भी हो रहा है, दिल्ली को भी होता है, सब होता है, लेकिन हम उसको मिलकर के उस समस्या का समाधान करें और पराली जलाने वाले जो किसान हैं वो न जलाएं, उनको सुविधाएं, उनको सब्सिडी, उनको इम्प्लीमेंट्स ये सब उपलब्ध कराएं. बड़ी स्पष्ट होगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दी डायरेक्शनां तो बाद कि पंजाब दे कल्ले किसान कोई जिम्मेवार नहीं है पोल्यूशन ਲਈ. ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ पर्टिकुलर मेंशन किया है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी. तो तमाम ਜਿਹੜੇ स्टेट्स हैं जिथे पराली साड़ी जाती है किसानां वालों और वो किते ना किते कारण बनता है. The Supreme Court had also asked both centre and states to plan a strategy to incentivize farmers from opting out of paddy cultivation, which forces farmers to burn stubble. But so far, there's been no progress in this. With Mohammad Ghazali, NDTV Bureau Report. So the pollution
levels in Delhi continue to remain in the severe category. Parmeshwar, more than 420 points this morning, 421 to be precise. And let's talk about, some of the other areas which are highly polluted as far as Delhi is concerned. This includes Anand Vihar at 429, Ashok Vihar coming at 432. We have Burari, just a little under the severe category. So we have certain areas, but overall the picture at 421 with areas of Dwarka crossing 460, 445 as far as the IGI airport area is concerned. And then we also have the Jawaharlal Nehru area coming in at 415, also Mundka at 428 this morning. So, Parmeshwar, what really needs to be seen is if the odd even formula will kick in, and of course that will only start from after Diwali. And the cloud seeding, is something that the Environment Minister had spoken about in the month of September, saying that they are going to, that was the winter plan to tackle the pollution problem. But I don't understand why the delay. I mean, we can visually see it, we can feel it. The elderly and the children are affected the most. Why the delay as far as the cloud seeding is concerned? In fact, doctors have raised concerns about the growing number of respiratory and eye ailments among children, the elderly. Practically everyone that's in the National Capital Region is feeling the effects of this toxic smog. Moving on to more news now, and NDTV has accessed the ethics panel report that examined the cash for query allegations against Trinamool MP. That's right, Trinamool Congress's Mahua Moitra, well, the ethics panel report says should not be allowed to continue as an MP and her membership should be terminated. Now, this is what the Parliamentary Ethics Committee examining the cash for query allegations against her has recommended. Calling Mahua Moitra's actions highly objectionable, unethical, heinous and criminal. The committee has said that it calls for severe punishment. In the operative part of the 500-page report that NDTV reporters have accessed, the committee has also recommended that a legal, intensive, institutional and time-bound investigation be held into this entire matter. The report will be submitted to the Lok Sabha Speaker during the winter session of Parliament, and action will be taken after a discussion that is going to take place, but she is expected to appear before the panel today. In fact, Maria Shakil has accessed this ethics panel report. Here's her top takeaways. Trouble only seems to be growing for Mahua Moitra TMC MP after what played out in the last ethics panel meet where Mahua Moitra had staged a walkout followed by MPs from the opposition parties. Now, before her another appearance and also the adoption of the report tomorrow, the details that have been accessed by NDTV talks about 3 recommendations. So the Vinod Sonkar panel of ethics committee, which is actually the panel which is looking into the cash for query allegations against TMC MP, has made 3 recommendations. It has gone on to say that her membership should be terminated from the 17th Lok Sabha. It also says that the money trail of the crash transaction between Mahua Moitra and businessman Darshan Hiranandani, whether it's part of quid pro quo, should be investigated by the Government of India. Now this report, after it's adopted by the Vinod Sonkar panel, will be submitted to the Lok Sabha Speaker, who will then be tabling it before the Lok Sabha in the winter session of Parliament to get a sense of the House. And only after the sense of the House is taken, the final move will be of terminating the membership of Mahua Moitra. But what about the criminal investigation? Similar to 2005, when the Pawan Bansal panel had recommended suspension and thereafter those MPs were expelled, what we had seen was the sense of the House was taken. LK Advani and the leader of opposition of both the houses of the BJP, be it Mrs. Sushma Swaraj and Mr. Arun Jaitley, had actually supported the leader of the house then, that was Pranab Mukherjee, in saying that all of them should be expelled. Thereafter, what had happened was that then the House had said that it is now for the Delhi police to continue the criminal investigation, and the Delhi police in 2007 had registered an FIR. So what next for Mahua Moitra? Will there be a CBI investigation? Remember,
remember, the news that is coming in today was also what had been said by BJP MP Nishikant Dubey, that the Lokpal, acting on his complaint, has said that there should be a CBI inquiry. So clearly trouble growing for Mahua Moitra. Well, in other news, Divya, guess who got a rather unpleasant present from the Enforcement Directorate on his birthday? Well, Trinamool Congress's National General Secretary Abhishek Banerjee has been summoned by the Enforcement Directorate, and the summons was sent to the Trinamool leader on Tuesday, which also happened to be his birthday. And now Abhishek Banerjee will appear before the agency at its office in Kolkata's Salt Lake area. The top TMC leader has been questioned by the agency earlier as well, and the questioning will take place in connection with ED's investigation into the alleged teachers' recruitment scam in the state of West Bengal. Now, as the battle for Rajasthan intensifies, Congress's Sachin Pilot spoke exclusively to NDTV. In fact, he speaks to NDTV on the Congress reversing the revolving door policy of the state electorate and Rahul Gandhi's message to him on forgive, forget and move on. सचिन पायलट, जिन्होंने टोंक में 2018 में एक इतिहास रचा और सबसे बड़ी जीत 54,000 वोटों की जीत हासिल की, अब एक बार फिर से मैदान में हैं। किस तरह की चुनौतियां हैं और क्या उम्मीद है, बात करते हैं सचिन पायलट से। 2018 के चुनाव से 2023 का जो चुनाव है, वो कितना अंतर है इस चुनाव के अंदर? ये चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय हम लोग विपक्ष में थे, यहाँ बीजेपी के विधायक थे, बीजेपी की सरकार थी, लेकिन 18 में जनता ने विश्वास किया हम लोगों पर और वोट डाला, सरकार हम लोगों ने बनाई और इन 5 सालों का मौका हम लोगों को मिला। और ये चुनाव मैं समझता हूँ कुछ हद तक अच्छा इसलिए है क्योंकि 5 साल का जो कार्यकाल था उसमें लोगों ने काम देखा है और जिन गाँव ढाणियों में पहले बिल्कुल विकास नहीं हो पाया था, आज हमने वहाँ सुविधाएं पहुँचाई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, सड़कें बनी हैं, स्कूल, चिकित्सा, शिक्षा, सब क्षेत्र में काम किया है। ये चुनाव इस बार इतिहास बनाएगा क्योंकि मैं मानता हूँ कि इस बार जो परिपाटी रही है वो बदलेगी और रिवाज बदलेगा और दोबारा लोग कांग्रेस को अपना वोट देंगे और सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। आप रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं, क्या टोंक में भी रिवाज बदलेगा? क्योंकि आज़ादी के बाद से अब तक एक भी कांग्रेस का विधायक दूसरी बार निरंतर चुनाव नहीं जीत पाया है, तो किस तरह की उम्मीद करते हैं आप टोंक की जनता से? तो आज तक आज़ादी से लेकर आज तक इस विधानसभा क्षेत्र में कभी कोई विधायक 50,000 वोट से कुछ जीता भी नहीं है, तो इतना बड़ा आशीर्वाद दिया था मुझे, तो मुझे देखो रिकॉर्ड वगैरह बनते हैं टूटने के लिए, तो मैं ज़्यादा आंकड़ों में मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन पब्लिक का जो सेंटिमेंट है, जो जज्बात हैं, जो जुड़ाव है, जो लोगों के बीच में काम किया, कोरोना के समय बहुत दिक्कत यहाँ पे आ गई थी और यहाँ के लोगों ने बहुत विश्वास हम पे किया है और मुझे लगता है कि यहाँ पर पहले से ज़्यादा बहुमत लेकर हम लोग कांग्रेस पार्टी जीत के जाएगी। सचिन पायलट, विकास की बात करते हैं, मैं आपका भाषण सुन रहा था, आप कह रहे हैं कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करती है भाजपा, वाकई जो है ये इस पे संज्ञान लिया जाना चाहिए? क्यों नहीं? आप अगर बात करते हैं चुनाव की, हम हर डिबेट के लिए, हर चर्चा के लिए, हर संवाद के लिए तैयार हैं। चुनाव लड़ना चाहिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पब्लिक इश्यूज को आप उठाओ, सरकार को चैलेंज करो, लोगों से सवाल पूछो, अकाउंटेबिलिटी तय करो, उसमें कोई परहेज नहीं है। लेकिन आप बजाय शिक्षा की, खाद, बीज, बिजली, पानी, नौजवान, रोजगार, उद्योग, निवेश, इन सब से ध्यान हटका के आप मज़हब की, धर्म की, मंदिर की, मस्जिद की बातें करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है। ये जज्बाती मुद्दे हैं और धर्म, हम हर व्यक्ति का अपना धर्म है, संविधान में लिखा है, आप हर मज़हब, हर धर्म की आप पालना कर सकते हैं, लेकिन इसका राजनीतिकरण करना वो बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं है। जज्बाती मुद्दों से लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर आप जो महंगाई और बेरोजगारी है उस पर फोकस नहीं करना चाहते हैं, सब समझ रहे हैं इस बात को। विकास की बात करते हैं, टोंक में जो है पिछले 5 साल के अंदर वो 3 जो बड़े प्रमुख काम हैं जो आपने किए हैं विकास को लेकर, काम तो बहुत हुए हैं विकास को लेकर, और 2 कौन से ऐसे काम हैं जो आप नहीं कर पाए, जो आप चाहते हैं कि अगली पारी में? ये गिनती आप जाएंगे तो हमारे यहाँ लगभग 190 छोटे बड़े गांव हैं, हर गांव तक हम लोग पहुँचे हैं। वहाँ तक पहुँचना, उनको विश्वास में लेना, चाहे छोटा काम बड़ा काम हो, अब कहीं पे हैंडपम्प लगवाना है, कहीं पे पुल बांधना है, दोनों बड़े अलग काम है, लेकिन काम सब तरह के हुए हैं। और मुझे लगता है कि जो
इस क्षेत्र में हम लोगों को और करना चाहिए, वहाँ कोई बड़ा उद्योग लगना चाहिए, क्योंकि जयपुर के पास का इलाका है, उसका लाभ हमें लेना चाहिए। जो राजधानी के पास के शहर गांव हैं, वहाँ पर रोजगार के अवसर ज़्यादा आ सकते हैं, तो उस दिशा में हमें और काम करना चाहिए। लेकिन बाकी यहाँ पर मूलभूत जो सुविधाएं थी उसको बेहतर करने का हमने काम किया है और एक अच्छा माहौल बना कर रखा है, क्योंकि जो भाजपा की राजनीति है वो टकराव की है, वो मनमुटाव पैदा करने की है, वो आपस में लोगों को असमंजस पैदा करने वाली है। उस राजनीति को हमने यहाँ पर अपने नहीं दिया, सब लोगों को साथ लेकर चले हैं, बिना भेदभाव के विकास हुआ है और लोगों को जितनी उम्मीद थी मुझे लगता है उसको पूरा करने में हम कामयाब रहे हैं। रेल एक ऐसा मुद्दा है, आपका 2018 की नामांकन रैली का वो भाषण कि अजमेर में 40 साल से जो मांग थी हवाई अड्डे की वो आपने पूरी की। रेल क्या चीज़ है? रेल 40 बोला था आपने, तो आपने वो एक शब्द और बोला था कि रेल क्या चीज़ है। क्या 2024 के बाद टोंक में भी रेल की सूची सुनाई देगी? टोंक को रेल से जोड़ने की जो योजना आज की नहीं है, पुरानी परियोजना थी, उसको स्वीकृति, उसका बजट सैंक्शन, उसका घोषणा सदन के अंदर लोकसभा में हमारी सरकार कर चुकी थी। दुर्भाग्यवश पिछले 9 साल से सरकार हमारे केंद्र में नहीं है और आप जानते हैं जो कुछ ऐसे विषय हैं जो राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र के बाहर के हैं, उसमें रक्षा आता है, विदेश मंत्रालय आता है, कम्युनिकेशन और रेलवेज, ये भारत सरकार के अधीन है और पूर्ण बहुमत की सरकार है बीजेपी की। हम लोगों ने मैनिफेस्टो में डाला था अपने, हम लोगों ने सारी यातनाएं कर ली, लेकिन मैं इस पे कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये अनदेखी और बेरुखी रखी, क्योंकि यहाँ सरकार कांग्रेस की थी। यहाँ पे रेल बन जाएगी तो उसका लाभ किसको मिलेगा? पब्लिक को मिलता है, लेकिन रेल में ऐसा तो नहीं कि सिर्फ कांग्रेस के लोग चढ़ के जाएंगे या सिर्फ बीजेपी के लोग जाएंगे। ये सोच व्यापक करनी चाहिए केंद्र सरकार को, क्योंकि केंद्र सरकार का विषय है, उसमें राज्य सरकार जो चाहती है हम करने को तैयार हैं, लेकिन ये ना डूंगरपुर बांसवाड़ा वाली रेल लाइन, ना ये टोंक वाली, इन दोनों परियोजनाओं को रोक के रखा गया दिल्ली से। धर्म पर राजनीति की बात होती है, आपने भी आज अपने भाषणों में बोला है। आपके मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्होंने आज एक बयान जारी किया है कि मंदिरों में कुछ भी फिकवा सकती है बीजेपी, ऐसी संभावना लगती है? मैं इन पे चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो मेरे क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मैं जहाँ प्रचार करता हूँ वहाँ सैद्धांतिक मुद्दों का, भविष्य का, विकास का अपनी बात को रखता हूँ। अगर मुझे कहीं आलोचना करनी है तो सकारात्मक करता हूँ, कमी निकालनी है तो जनता के दृष्टिकोण से देखकर कमी निकालता हूँ। ये इस प्रकार की बात और भाषण मेरी प्रवृत्ति में नहीं है। मैं तो लोगों के बीच में विकास और डेवलपमेंट की इशू को रखता हूँ सर। Let's turn our attention now to Jammu and Kashmir, where one terrorist was killed in an encounter in Shopian. The encounter that took place in the Shopian district was a joint operation conducted by the local police and the Indian Army. And with that, we're sitting into a very short break. Welcome back. Violence has spiked in Manipur, with at least 9 people being admitted to hospital due to injuries. And sources said some people from the valley areas had been searching for 2 youths, a 16-year-old teen and a 19-year-old, who went missing on Sunday, an incident that has led to fresh protests in Imphal. That's right. Also, there was another incident that was reported, and the Kuki group ITLF alleged in a statement that 4 middle-aged civilians have been kidnapped some 45 kilometers from Imphal. Our colleague Rathadeep Chaudhary reports. The cycle of violence continuing in Manipur. 4 middle-aged civilians kidnapped near Kangchup Chingkong village in Kangpupi district, 45 kilometers from Imphal. The Manipur police in a post on X confirmed the incident and said a car carrying 2 women and 3 men en route from Churachandpur to Lemakong was confronted by an enraged mob. The mob forcibly took away 4 of them while 1 escaped. That person was later rescued by security forces and further airlifted by chopper to Dimapur for further medical treatment. Security forces are actively working to locate the missing individuals and rescue them, police added. They were intercepted in Kangchup areas, and among the 5 travelers, 4 of them have been abducted, and so far we do not know the condition of these 4 people. Meanwhile, in separate incidents, 9 people were injured in firing at 4 places in Manipur, allegedly between 2 groups. The first firing took place in the morning in Kangchup village, adjacent to Phaying village, 15 kilometers from the state capital, Imphal. Among those injured were policemen too. Manipur has been on the boil since May, and the endless violence continues to haunt citizens whose lives have been completely disrupted. The latest spike in violence is a concern for authorities and security forces. An NDTV Bureau report.
Moving on now on an election report all the way from Madhya Pradesh. NDTV has, in fact, gone to the Grand Mahakal corridor in Ujjain and brought us this ground report with our colleague Maria. Right, here's what people had to say about the employment opportunities provided by the corridor. Listen in. माधुरी जी, अभी हम यहाँ पर ये महाकाल कॉरिडोर में हैं। महाकाल लोक बोलते हैं। इसने तो उज्जैन की शक्ल बदल दी। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल पूरी तरह से उज्जैन को बदल दिया है इसने। उज्जैन का चेहरा पूरी तरह से बदल गया है। किसी ज़माने में उज्जैन एक बिल्कुल छोटा सा शहर लगता था, एक महाकाल मंदिर ही एक अट्रैक्शन था लोगों को, पर अब जब से महाकाल लोक बना है तो उज्जैन पूरी तरह से उज्जैन की शक्ल बदल चुकी है। आप खुद को पुरोहित कहती हैं, प्रीस्ट नहीं जी, क्या फर्क है? मैम, पुरोहित और प्रीस्ट में फर्क है। प्रीस्ट जो हैं या पुजारी जो हैं वो केवल पूजा करवाते हैं, कर्मकांड करवाते हैं, हवन यज्ञ आदि करवाते हैं, और मैं अपने आप को पुरोहित कहती हूँ क्योंकि वयम जागृतम पुरोहित, वयम राष्ट्रम जागृतम पुरोहितम, मतलब मैं राष्ट्र को जगाने वाली पुरोहित हूँ। जहाँ समाज में कुछ बदलाव चाहूँगी, समाज में कुछ किसी तरह का समाज का उत्थान के लिए ये कार्य कर रही हूँ मैं समाज, और अपने जो हिंदू सनातन धर्म जो है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी। आपने देखा होगा कि पुराने काल में भी इतिहास में अगर हम पढ़ें तो गार्गी और विदुषी जिस प्रकार की हमारे यहाँ विदुषियाँ हुई हैं, और जो राष्ट्र को, शास्त्र को हमारे आगे बढ़ाने में उन्होंने बहुत योगदान दिया। तो इस तरह का छोटा सा कार्य अगर समाज में हम करते हैं राष्ट्र को जगाने का, तो मेरे ख्याल से हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये महाकाल कॉरिडोर जो पूरा बना है लोक, उससे क्या फर्क पड़ा है? यहाँ पे लोगों को रोजगार मिला है इससे, जो बेरोजगार घूमते थे उनको रोजगार मिला खास। तो आप भी बेरोजगार थे? जी, हम दूसरे की दाड़की करते थे, लेकिन आज खुद का धंधा है। क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, कितने दिनों से ये चला रहे हैं? जी, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन 6 महीने हो गए। 6 महीने से? और ये 6 महीने। आपके भी 6 महीने से ये चल रहा है? दिवाली बाद के उद्घाटन हुआ। हाँ। मोदी जी ने 11 तारीख के उद्घाटन करें, जिसके बाद से लगा है। हाँ। जब से यही धंधा कर रहा हमारे टेबल का। और कितना कमा लेती हैं एक दिन में? अपने दाड़की निकले जाए और क्या। हाँ। कमला भाई, यहाँ पर जो कॉरिडोर बना है, हाँ, उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कमा रहे हो, खा रहे हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। वो बन गया नहीं भोलेनाथ की नगरी में, कितने आते हैं कितने जाते हैं, और महाकाल में बहुत ही बढ़िया है। तो कितना बिकता है ये? क्या क्या है? आप अपना सामान दिखाइए। देखो, ये डबल एक्सएल, ये डबल एक्सएल, ये एक्सएल, ये एल, ये दुपट्टा, ये दुपट्टा, ये दुपट्टा, ये बच्चों के। कितना में ये बिकता है? ये 100 रुपये में बिक जाता है, 90 में भी दे देते हैं। तो एक दिन में कितना बेच लेती हैं आप? अब 10 बिक जाए, 20 बिक जाए, नहीं भी बिके, गिराकी के ऊपर, गिराकी के ऊपर। कितना कब लगाया था आपने ये स्टॉल अपना? साल भर हो गया। साल भर में अच्छा है? अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। And with that, we're slipping into a very short break. Meanwhile, a romantic film that will lift your mood and spirits. That's what this new movie that Uma Sudhir is covering promises to do. That's coming up in a moment.